time to join us for this AMA session. I'm Mithun, your host for this particular session, and joining me from AMD is Mr. Srinivas M. Reddy, who's the country head for component channel sales and distribution. Hey Srini, are you there? Would you like to share a few words with our viewers? Hey, hi. Thanks, Mithun. Thanks for the introduction. Yeah, hi, all, everybody. It's very exciting here to see you all and kind of join you for this AMD is the newly launched Cezanne parts, codenamed Cezanne, the 5000G series processors. Deep dive session. I would be happy to kind of address your questions, queries through this session as Mithun takes through the product updates with you all. It's very exciting here. As Mithun introduced, I lead the component channel business for India and happy to be with you all here. Let's look forward for this session. Thank you. Thank you, Srini. Before we begin the session, I'd like to let you all know that we do have plenty of time to answer your questions throughout the सो session. हेलो गाइस हेलो So, without ऑडियो further ऑडियो ado, क्लियर आ रही है क्या सबको एक बार मेंशन कर दो चैट में जिनको ऑडियो ऑडियो सब क्लियर आ रही है started. And for those of you who signed up via Facebook and our भाई WhatsApp आवाज़ group, बहुत कम आ we रहा have है questions from you. So we'll be answering some of those, and we'll also be answering some from the live वेट chat in chat box. And for the folks who are coming up with the most interesting questions, we also have Amazon gift vouchers up for अब grabs. ऑडियो We क्लियर आ have रहा है 5 क्या of those, each valued at 2,000 rupees, and we'll be announcing the winners on Monday on this very same video. So if you सो come to गाइस the देखो video on ये ना Monday, you AMD can के check them 5000 सीरीज in the का comment लाइव स्ट्रीम section है below us. एंड आप में से जितने And लोग ना with that एक said, इंटरेस्टिंग we क्वेश्चन will begin पूछोगे the session. ठीक है उनको एक अमेजोन वाउचर गिफ्ट में मिलेगा तो आप लोग जो भी अपना क्वेश्चन पूछोगे इंटरेस्टिंग वाला उसके साथ ना So साथ the में Ryzen क्वेश्चन के साथ 5000 अपनी processors ईमेल were आईडी भी first जरूर लिख announced in लेना तो मैं October उसका last स्क्रीनशॉट year लेके भेजूंगा and saw AMD को तो आपको AMD's जो है वो एक latest गिफ्ट वाउचर भी CPU मिलेगा तो microarchitecture, ये अभी नहीं which है is जब बोलूंगा Zen जब 3 करना in पर अभी action. के लिए रुक जाओ It brought with itself significant single-threaded as well as multi-threaded performance gains. In fact, all the Ryzen 5000 series processors scored more than 600 points in the Cinebench R20 single-threaded benchmark. And these were the very first processors ever Wait, to let me break the increase the 600 volume. point barrier. Today's session is all about the AMD Ryzen 5000G series APUs, which include the AMD Ryzen 5 5600G and the Ryzen 7 5700G APUs. APUs are simply processors which also include an integrated graphics processor or IGP. भाई And आवाज़ और बढ़ाओ usually when we आप सही है क्या मैंने बढ़ा folks दी भाई hear आवाज़ about the term एक बार APU, दोबारा बता दो we sort of assume that the कई processor will लोग be बोल रहे हैं meant for क्लियर है entry-level segment, but that's not really the case here, as the two SKUs that we are talking about today, that is the Ryzen 5 5600G and the Ryzen 7 5700G, are meant for the mid-range and high-end segments. To top that, the integrated graphics, which is powered by AMD Radeon graphics, is way more powerful. ऑडियो And क्लियर you'll ओके see all of ओके those ओके in the coming slides when we share the benchmarks. गाइज ऑडियो ने एक्चुअली सोर्स से Now, ही कम आ this रही also है begs the तो question, उसमें मैं कुछ कर नहीं who सकता are these new APUs meant for? To start off, you have the very latest Zen 3 microarchitecture powering these processors. This offers enthusiasts the raw processing power to run the latest AAA video games and even content creation applications. The Zen 3 cores are the exact same ones that you find within the other members of the Ryzen 5000 family. And on top of that, you also have a premium IGP, which offers तो यहाँ much पे ना higher आपको performance AMD in के जितने gaming as APUs well हैं as in 5000G content सीरीज creation के उसके बारे में applications. बताया जा रहा है And when you usually hear about flagship CPU performance, it's natural for one to assume that these might actually have higher power requirements, and that might necessitate a PSU upgrade. Again, that's not the case either, because these new APUs are typically designed with a TDP of 65 watts. So practically every AM4 motherboard, which already has the appropriate VRM design, can easily आप ऐसे handle कितने these लोग new वैसे APUs. APUs में इंटरेस्टेड हो क्योंकि If you अभी have a GPUs की compatible प्राइसिंग का आपको पता ही AM4 होगा motherboard तो that ज़रा uses बताओ a चैट में कितने लोग B450 हैं or higher chipset, all you need is APUs a में simple इंटरेस्टेड BIOS upgrade, and then you can drop these APUs in and get started. And for folks wondering तो about ये the देखो core इंडियन configuration प्राइसिंग of the APUs Ryzen की 5000G इंडियन series प्राइसिंग आप देख APUs, सकते हो मैं जरा we now चैट को have उस तरफ all ले the आता हूँ specifications in front of you. In the mid-range, there's the AMD Ryzen 5 5600G, which is a 6-core APU with multi-threading, which means that the operating system has 12 threads coming from the processor. The base frequency is 3.9 GHz, and with favorable conditions, that can go up to 4.4 GHz. It has a total cache of 19 megabytes and
The IGP is powered by AMD आज Radeon PC Vega लेके क्वेश्चन नहीं graphics पूछ सकता कि that has संडे की तरह 7 ब्रो लास्ट compute में पूछ units सकते हो which एंड can में go थोड़ा up भी to ये 1.9 इवेंट देख लो gigahertz. उसके बाद The पूछ लेना 5600G has a SEP of 22,990 rupees along with tax added on top of that. And then we have the high-end APU, which is the AMD Ryzen 7 5700G. That has 8 cores again with multi-threading, so that's a total of 16 threads for the operating system to play around with. And as for the speeds, the 5700G starts off at 3.8 gigahertz and its boost frequency can go up to 4.6 gigahertz. It has 20 megabytes of total cache and the IGP has 8 compute units which can go up to 2 भाई मेरा gigahertz कुछ should the खरीदने का need इरादा arise. नहीं है पर फिर The भी मैं नॉलेज के 5700G लिए आया carries हूँ an भाई यही SEP तो of पैशन है भाई नॉलेज गेन करो और जब पैसा 29,990 हो जाए फिर rupees बिल्ड करो with tax added on top. And both of these components, like we mentioned previously, are rated for 65 watts TDP. With that, you have a nice overview of the two new processors that we are going to be looking at in today's थैंक यू session. राइडर ब्रो फॉर 20 And सुपर we'll चैट be now breaking to take a few questions from you guys. ओके अब Q&A हो रहा है नाइस Hey Srini, we have a couple of questions from our viewers. The first one is from Kuldeep, who asks, what is so special that makes anyone कुलदीप से भाई choose कुलदीप तो these new यहाँ लाइव स्ट्रीम processors? कर रहा है मेरे नाम से कौन क्वेश्चन पूछ Okay, रहा है that's a good question, Mithun. Thanks to Kuldeep. 5000G series processors are the latest APUs which we have launched on the same Zen 3 architecture, which we have the 5000 series X, 5000X series processors, which we launched last year around October. So you guys don't need to compromise on the यहाँ CPU पे गाइस देखो performance. आप We ना have the same kind जो of performance क्वेश्चंस on an पूछोगे ना अपने APU इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस coupled with वो जो है latest आप Radeon अपनी ईमेल आईडी के साथ cores पूछना on it, which ताकि gives आपको you the कांटेक्ट किया best जा gaming सके Amazon के experience गिफ्ट part of वाउचर it के लिए as a ठीक है package. So it makes really the best CPU you can find with the best graphic cards ever on a CPU architecture. And Boro Manthan has asked a simple question, which we've already covered. This is, how many cores does it have and does it support SMT or Who are multi-threading? these dudes तो Oh आपके जो yeah, राइट साइड में है so we वो have launched AMD two इंडिया के new हेड है variants in आप the ऐसा समझ channel लीजिए एंड market. जो आपके One is लेफ्ट में the है वो 6 हमारे core डिजिट के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो 6 core जो कि part, which इंटरव्यू is कंडक्ट कर रहे हैं 5600G, and the other one is the 8 core part, which is 5700G. Both does support SMT, अच्छा and मेरी you आवाज can लो है be assured of these both range of CPUs, which मेरी can आवाज लो है क्या meet your needs. अब ठीक है मेरी The आवाज third question is from Vaibhav Vishal, who's asking, is it good for each and every day-to-day tasks? Okay, so you guys have seen the आप experience, सही है most मेरा of you have आवाज experienced the 5000X series गाइस processors. Our day-to-day activities are like most easiest workloads for those processors. So with the same architecture here on the APUs, the Cizan platform, you can be rest भाई assured कोई that your यस बोल daily रहा है कोई कह रहा है वॉइस activities, इज नॉट day-to-day ऑडिबल activities can be dealt easily. At the same time, you can have the best of the games played on it, be it AAA or most of the esports gaming games on this both processors. And the last question is from Divakar Mazumdar, who asks, can we upgrade to a graphics card in the future if we use these processors? That's the beauty of our architecture today. We give that kind of compatibility and अरे भाई upscaling गैम्बिट सेंपाई इन द opportunities चैट for most of you who are investing on us. So yes, definitely you can pair it with a future ready graphic cards if you really need a better frame rates and dedicated to maybe AAA kind of gaming. Yes, you can choose तो our मैं latest अपनी 6000 वॉल्यूम series इंक्रीज graphic करूं cards, which definitely suits you, and it can work easily without any hassle. ठीक है मैंने अपनी Thank वॉइस you और for इंक्रीज कर दी answering all those queries. Now we'll go on with the session. So you heard Srini mention about some of the benchmarks or the performance aspects, and आप कोई right कह now रहा है we डिक्रीज have योर between, वॉइस or rather, right now we have in front of us are those exact benchmarks. So we are looking at the generational performance uplift between the 3000G series APU and the new 5000G series APU. We see a performance improvement to the tune of 2.78 times of what the Ryzen 5 3400G was capable of.
And this Where is in we have to Cinebench write our questions. R20, आपको अपने questions ना because these chat new पर ही APUs लिखने now हैं have with a your lot email more ID. cores. The तो 5700G एक email ID in pick की particular is जाएगी. an 8-core CPU. मतलब So एक that बंदा जिसका सबसे naturally helps interesting in question होगा. multi-threading benchmarks. But even if you look at the single-threaded benchmarks such as Cinebench R20 or a more balanced benchmark such as PC Mark 10, you still see an improvement of 1.45x and 1.44x respectively. And as for अरे the भाई आप लोग ना मेरा integrated काट रहे हो भाई, graphics, मुझे लग रहा है that भाई is ऐसा भाई. integrated AMD Radeon graphics, 3D Mark Time Spy scores see an uplift of 1.13x or 13%. Now, these are all industry standard benchmarks. Let's take a look at some of the gaming benchmarks. Again, we have a couple of popular esports titles, just League of Legends and तो यहाँ पे देखो CS:GO, आप स्क्रीन पे देख along with a सकते हो couple आपके of जो AAA AMD के titles such APUs as हैं उनका ना Metro esports Exodus, गेम्स में जो है वो कैसा Fortnite, and परफॉर्मेंस है Civilization इंटीग्रेटेड 6, ग्राफिक्स to पे, name a few. तो वो You आप can देख see that सकते the हो. new Ryzen 5000G series APUs give up to 2x the frame rate as seen in League of Legends. And in games such as Fortnite, we can see a frame rate increase of ओके 20 प्रोग्रामर हब FPS, भाई. which is quite a significant bump when you're looking at an IGP. कहाँ कमेंट डालें भाई? Now, चैट में ही कमेंट that डालना है आपको. was चैट में ही कमेंट डालना generational है. uplift between the 5000 series and the 3000 series. चैट में ही Let's कमेंट take a डालो look विद at योर ईमेल one of आईडी the और जिसका सबसे processors इंटरेस्टिंग in क्वेश्चन a होगा उसको little more अमेज़न का गिफ्ट detail. वाउचर We'll मिलेगा. start off with the Ryzen 7 5700G. Like we mentioned previously, this is an 8-core CPU with multi-threading, and the boost clock can go up to 4.6 GHz. Being a high-end processor, the 5700G भाई is ऐसा not only इंटरेस्टिंग useful क्वेश्चन नहीं for पूछना gaming, भाई. but also for content creation applications. And we ओके previously अंकित saw a चावला small भाई ने collection पूछ of लिया क्वेश्चन. benchmarks in the तो किसी generational का भी एक uplift सेलेक्ट हो graph. जाएगा रैंडमली. Now we're going to be मतलब जो सबसे seeing the इंटरेस्टिंग होगा. comparison of the new 5700G against some of the competition processors. Now this is in the exact same price class, so you know it's a fair comparison. The 5700G is being compared to a competing processor, and we can see the performance delta ranging from 19 FPS in some games to 50 FPS in other titles. Warframe, which is a popular online co-op game, clocks in at 90 FPS, and CS:GO, which is again a फहाद अल popular मसूद FPS भाई सिर्फ title, 5000 hits सीरीज एपीयू को 127 लेकर ही frames क्वेश्चन per second. पूछना है या फिर कोई Pairing भी this पीसी रिलेटेड processor क्वेश्चन with पूछना a है variable भाई. refresh rate monitor could मैं बोलूँगा significantly 5000 improve your सीरीज के gaming रिगार्डिंग ही experience, क्वेश्चन as you're पूछो seeing बिकॉज 100 उसी plus का frame इवेंट rates है, in quite a lot of क्योंकि games. अगर वो नहीं पूछोगे क्या पता AMD रिजेक्ट करते, तो इससे अच्छा हो While सकता है आप you उसी से saw रिगार्डिंग पूछो तो ज़्यादा gaming अच्छा रहेगा. benchmarks, we now have more benchmarks pertaining to content creation applications. अरे And भाई you can see they've been आयुष भाई भी आ गए bucketed भाई. into 3 separate buckets, where there's a performance increment of 23% when compared to competing processors. And if you're looking at productivity applications, then there's a performance delta of 16%. And in general, औसम भाई there's बोल a रहे हैं ये लेने performance से अच्छा improvement of 5600X के about साथ GT 710 क्यों 31%. ना लें, cause प्राइस And शायद that सेम रहेगी एंड was the परफॉर्मेंस भी benchmarks बेटर हो. for the Ryzen 7 यस 5700G. 5600X इज We बेटर can इन now जस्ट pause CPU again to परफॉर्मेंस, take a ठीक है, few लेकिन more अगर आप GT questions. 710 ले रहे हो तो Srini, APU if के you're मामले में there, बोलूंगा कि I 710 से have फास्टर a है couple APU. more questions from आई मीन our 1030 वाली परफॉर्मेंस So देगा. Shubham Gupta is first. He's asking, how long will it support Windows operating system updates? Yeah, that's a good question. ये कैसा Not क्वेश्चन है? just we are talking about compatibility for future ये कैसा क्वेश्चन है भाई? parts, but not just that. We're talking also about the software रैम कहीं compatibility. मेंशन ही नहीं है. So लॉल. we are not यस just Windows यस 10 यस. ready, but also Windows 11 ready as we speak, and you can easily port onto Windows 11 when it 3400G is पे कौन launched. सा लूं? 3400G के साथ Next ना आप up 16 is सीरीज के कार्ड तक ले Bibalendu सकते हो, Das, 20 who सीरीज में मत asks, जाना. is it उससे a ऊपर 7 nanometer processor? Yes, of course. So both are 56G and 57G. Both are based on the latest 7 भाई nanometer FinFET technology. And yes, I confirm that. Okay, and the next question is by Harsh Mevada, who asks if he साराई can चौधरी भाई overclock बोल रहे हैं this कि व्हाट particular लिक्विड processor. कूलर शुड आई बाय फॉर 5950X. Yeah, तो as मैं you बोलूंगा guys अगर आप have परफॉर्मेंस experienced, देख रहे हो तो almost परफॉर्मेंस में all मैं आपको our रिकमेंड करूंगा Ryzen कि गो विद CPUs are आर्कटिक या फिर factory लियनली का unlocked. गैला So है you 360 guys mm. can see the same feature being available on our 5000G series processors as well. Yes, both the CPUs are unlocked and you can overclock as well. Up to your taste buds, you can do that. And this last comment or other question is from the chat box. This one asks, is FSR supported on the 5000G series?
Yeah, FSR Fidelity FX Super Resolution is one of such great features we have today in our CPUs. I'll be happy to say that even this 5600 feature non-X is कब आएगा enabled भाई? on our लगता नहीं कि आएगा. 5000G series CPUs. You just need to enable संडे as को and सब when you play लेकर those स्ट्रीम games. करोगे क्या हमेशा की And तरह? yes, you यस got ब्रो to be करेंगे ब्रो, updated with डेफिनेटली your करेंगे. latest drivers, which will take care of it. So FSR is enabled on both these. All right, with that, we stop our second Q&A session and head back to the presentation. Thank you, Srini. Now we are looking at the Ryzen 5 5600G. It's the mid-range 6-core APU. Again, this thing comes with multi-threading. ओके, यहाँ पे देखो 5600G के बारे में बता रहे हैं. मुझे लगता है आप लोगों को वैसे पता होगा. The mid-range is the most popular segment. Can we use this processor with gigabyte power supply? Of course, but no guarantee कि आपका CPU उसके बाद CPU रहेगा. Here are a few more benchmarks to show how it performs when compared to the competition. तो भाई ये रहे 5600G के बेंचमार्क्स iGPU पे. ठीक है, तो देख लो कितने FPS मिलते हैं. CS:GO खेलते हो तो 100 से ऊपर FPS मिल रहे हैं, देख लो. Then there's Assassin's Creed Odyssey hitting 33 frames per second, and Metro Exodus, which is quite an intensive title, that scores 44 FPS. And if you're looking at popular esports titles, then you also have CS:GO and League of Legends in this chart, where you can see you're getting more than 100 FPS. Fortnite even goes all the way up to 184 FPS compared to the competition. The gray bars are exactly what the competition performs at. And you can see that there's a pretty wide gap across most of the titles shown here. Now, like we saw with the 5700G, the new 5600G is also great at content creation applications. On average, there's a performance improvement of 27% in content creation applications. That's a little more delta compared to what we saw the 5700G. And if you're looking at productivity applications, then there's a performance delta of 16%. And in general, there's a performance 3060 वर्सेस Radeon 6600XT में क्या डिफरेंस है ब्रो? इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है रिसेंटली, सारे GPUs के ऊपर, टेंशन मत लो. Now, those were just some of the titles that we saw in the benchmark sheet. And the new Ryzen 5000G series APUs have been shown to score over 100 FPS in a lot more demanding titles such as Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 5, The Witcher 3, and a lot more. You have a nice list right in front of you. And if you paid attention to some of the recent announcements made by AMD, and also like Srini mentioned recently while answering one of the questions, you would have heard about Fidelity FX Super Resolution, a new feature that helps gamers get a lot more frames per second in video games. Now, several titles have already incorporated AMD's Fidelity FX Super Resolution or FSR, and this includes titles such as Resident Evil Village, Godfall, The Riftbreaker, Anno 1800, Dota 2, and King's Hunt. There are a lot more titles in front of you, and these were just the games that currently support FSR. There are a lot more. तो ये आपके ना कुछ FSR सपोर्टेड गेम्स हैं जिनमें आप Fidelity FX Super Resolution का जो है मजा ले सकते हो, आपके FPS बढ़ जाएंगे. It might be at launch or it might be in a patch later on. This includes Baldur's Gate, Far Cry 6, suggest motherboard for Ryzen 5 5600 बजट से 15K के अंदर यार सॉरी Asus का ना टफ ले सकते हो. Asus का टफ लो B50 X570 जो अच्छा लगे, जिसमें आपको अपने हिसाब से फीचर्स मिल रहे हो वो आप ले सकते हो. Of AMD's FSR tech. So we can take another break now and handle a couple of more questions. WD Blue या Seagate Barracuda both जो है वो लगभग सेम परफॉर्मेंस ही देते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो कोई भी उठा सकते हो जो सस्ते मिले. Ravi Kumar who is asking what are the MSRP and the available distribution channels. He also has a comment which says the resellers are stocking up and selling at a premium in e-commerce space. Okay, I think it's a very valid question. Thanks, Ravi. I would love to address your query FSR will be supported in 3400G. If you look at the MSRPs, we have something called ACP, suggested technically price. NVIDIA में चला सकते हो. These prices are in line to our global price points. We operate the same price points even in India. You can look these prices at any of your neighborhood store across India. The prices still remains in line to our global announced SAPs. What does it make difference on an e-commerce platform is something you guys need to know. E-commerce platforms in India
are marketplace wherein the platforms charge their commission for whoever is selling on their platform. So from suggested SEP to the price what you see on any retail portals, you definitely will see slightly higher than the SEP or in line to SEP, but the difference is just because the platforms have their own cost to the sellers. I hope I addressed your query. And we are going to be 5600G with 3060 Ti bottleneck होगा most probably अगर अच्छे resolution पे खेलो like 2K नहीं होगा. Can it run games at 1080p settings? भाई ये कैसा क्वेश्चन था कि 1080p पे गेमिंग कर सकते हैं? If you look at these processors are well built for that 1080p settings. Any games for that matter with 1080p settings, you can easily play. While you guys have gone through the slides which Mithun was taking through, you have seen the FSR feature is one such feature which can help you guys really boost the performance. 5950X के लिए बेस्ट मदरबोर्ड 5950X के लिए बेस्ट मदरबोर्ड यार आपके बजट पे डिपेंड करता है. ASUS का X570 Strix E B50 Strix E Strix F Dark Hero Crosshair Hero सारे टॉप एंड बोर्ड्स में से कोई भी उठा सकते हो, आप ले सकते हो. What is the difference between this and the last series? Okay, so it's still valid follow-through question. Definitely, there will be always expectation when you have a successor coming, and you can watch on these CPUs. You will see these CPUs are built on the 7nm FinFET. Latest on the latest MSI B50 mortar. Yes, MSI B50 mortar is also a good choice. You can go for it. Performance boost in the graphics because we Why have G variants have less cache? तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसको आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की तरीके से भी पूछ सकते थे. वैसे अपनी ईमेल आईडी लिख के बटन बता देता हूँ बिकॉज़ उसमें iGPU है. तो iGPU को वहाँ पे डालने के लिए ना स्पेस चाहिए होती है CPU के अंदर. तो अब वो स्पेस कहीं से तो आएगी, तो उसकी जगह कैश को कट कर दिया, उसकी जगह पे वहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो है वो डाला है. How much is the 5000 series good at while playing AAA titles for the new gen era? Basically, he's asking how good is the 5000G series. Sir, मेरा एक क्वेश्चन है गैम्बेट भाई. आपका क्वेश्चन आयुष भाई की आयुष भाई की वीडियो में आ गया. You guys have seen most of the titles. You would have seen through the slides. We have अरे गैम्बेट आयुष भाई को हमारा हेलो बोल दो भाई. Which is already compatible. With FSR feature in place, any future we are already working with a lot of any future AAA titles पर किस CPU के लिए ले लो? Ryzen 5 के लिए ले लो तो अच्छा है. 7 भी लगा ही सकते हो वैसे. Feel the difference and run those games at the frame rates you expect to run without any stutter-free kind of an experience. प्राइस मार्स जेवियर भाई स्टार्टिंग में दिखा दिए वैसे. क्या बोलते हैं CPU इन APUs की. आपने शायद लेट ज्वाइन करा. So, because you have AMD's Radeon graphics powering the IGP within these new APUs, you also get the benefit of the Radeon software that has been built over generations भाई कोई Ryzen 3 5 Gen APU मिलेगा क्या bro? ये 5000 सीरीज का ही APU क्या लॉन्च का वो दिखा रहे हैं इंडिया में. FSR as we've just talked about, and that also includes Radeon Boost, which is again another technology that helps you get a slightly better experience. Then there's Radeon Anti-Lag, image sharpening, Daksh Avna, bhai, what do you think which is better for 5800X with 3070 or 5600X with 3080 for 2K 144Hz gaming? I would personally go with 5600X with 3080 because GPU matters. That is AMD Fidelity FX Super Resolution is something we'll be going to a little more detail. Now you get an average performance improvement. Okay, गैम्बेट भाई तुम्हारे लिए मोमोज लेके आएंगे भाई हम. 4x in certain titles. Now FSR has how to use NVMe SSD without M.2 slot. तो भाई enclosures आते हैं, उन enclosures के अंदर आप SSD को ले सकते हो और फिर उसके बाद ना उसे USB या फिर USB-C के प्रोटोकॉल के थ्रू आप यूज कर सकते हो. What you have running. Now, if a particular game gives you, let's say, less than 100 FPS in ultra quality, you can switch it down to performance or balance and then get more frames. Now, higher frame Ryzen 3 इस लाइनअप में है क्या नहीं? लाइक Ryzen 3 5200G ब्रो, अनफॉर्चुनेटली Ryzen 3 5300G है, बट वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो OEMs के लिए, लाइक HP, Lenovo, इस टाइप के OEMs के लिए. तो अभी आएगा तो देखते हैं आप लोग के लिए. IGP, that is AM4 socket or new socket? Of course AM4 socket bro. No new socket right now. And whatever tech you have in your graphics cards that is part of the AMD GPU open platform is also available on these APUs as well as the notebooks.
Now, you've seen how FSR actually improves performance as well as gaming experience. Let's take a look at some benchmark figures to see how big of an improvement you can experience. अरे भाई प्रोग्राम भाई तुम यहीं के रहने वाले हो क्या? तुम्हें कैसे पता उसके बारे में? Ryzen हम तो आइसक्रीम खाने जाते थे वहाँ. 5700G with FSR turned on, and all these titles that you see in front of you were benchmarked at 1080p resolution at varying graphics settings. The white bars represent AMD's Ryzen 7 5700G with FSR turned off, and the orange bars represent the same processor with FSR turned on. You can see how Anno 1800. तो यहाँ पे ना जो लोग FSR की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं ना वो FSR की परफॉर्मेंस देख सकते हो कि इन गेम्स में अगर आप FSR ऑन करते हो 5700G APU पे तो वाइट वाला है कि पहले कितने FPS आ रहे थे और जो ऑरेंज वाला है वो है कि FSR ऑन करने के बाद कितने FPS आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो परफॉर्मेंस मोड में around 20 FPS or more across all these. हाँ भाई यहीं रहता हूँ विधानसभा के आसपास. अरे भाई फिर मिलो भाई कभी फिर. That you're getting just by turning on a software feature. B450 Tomahawk और B450 गेमिंग प्रो कार्बन में से कौन सा लो? कोई सा भी ले सकते हो. बोथ आर ग्रेट. अच्छे तो ये है कि कार्बन में थोड़े ना USB पोर्ट या फिर SATA पोर्ट ऐसा इसका शायद आपको बेनिफिट मिलेगा टॉमहॉक के मुकाबले. एज फार एज आई नो, आई कुड बी रॉन्ग क्योंकि बहुत पहले लॉन्च हुए थे. holding out on buying a new PC simply because ईमेल पे कैसे चैट करूं? ईमेल पे चैट नहीं करना ब्रो. आपको क्या करना है, आपका जो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ना उस पे वो अपना क्वेश्चन लिखो एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा और उसको भेजो. उसके साथ अपना ईमेल आईडी भी लिखो क्वेश्चन के साथ, और मैं उसका क्या बोलते हैं सारे जो इतने भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे उनमें से एक चूज करना, उनमें से एक बंदे को चूज करके आपको Amazon में गिफ्ट वाउचर मिलेगा. For the Ryzen 5000G series processors, all you need are AMD AM4 socketed motherboards built using the AMD 400 and 500 series chipsets. This includes the B450, X470, A520, B550. तो यहाँ पे देखो आप कंपैटिबल चिपसेट्स देख सकते हो कि ये जो APUs हैं ये कहाँ चलेंगे. ये आपके B450, X470, A520, B550, X570 इन चिपसेट्स में चलेंगे, A320 में नहीं चलेंगे. Take that BIOS, flash it onto your motherboard, swap the processors, and you're good to go. रिजल्ट कर अनाउंस करोगे गिव अवे का रिजल्ट ब्रो क्या बोलते हैं अनाउंस हो जाएगा, टेंशन मत लो. आपको कम्युनिटी पोस्ट में पता चल जाएगा कौन बंदा जीता है. Zen 3 micro architecture and it's paired with their Radeon graphics, again premium IGP coupled with premium micro architecture to give you really good gaming performance as well as content creation performance. And because these new processors are now in the mid-range as well as in the why won't I buy 3400G and then using FSR? Yes, you can do that, but then आपके पास जो है पुराना जन का CPU होगा, और अगर आप फ्यूचर में GPU लगाना चाहते हैं तो आप 16 सीरीज से ऊपर के GPU नहीं लगा पाएंगे because of bottlenecks. In the mid-range you have the 5600G and in the high-end segment you have the 5700G. हेलो ब्रो, क्या देख रहे हो? It's AMD's भाई हम देख रहे हैं AMD का इंडिया का ये 5000 सीरीज का लॉन्च of AMD's Radeon software to go with the IGP. उसका बजाय ताली XD lol. The slides, but we still have time for one more session of Q&A. So if Srini, you're there, I will switch to our last set of questions. Yes, Mithun. The first one is from Rahul Malviya, who asks, is it good for content creation applications such as Adobe Premiere Pro, After Effects, 5600X के साथ 2060 अच्छा है क्या? हाँ लगा सकते हो. Yes, so these processors are really good when it comes to content creation as well. As you have gone through the slides, certain benchmarks we showed up to 20% against a competition. We show uplift when it comes to content creation applications, be it Adobe Photoshop, kind of applications or any other related ones. So we do see upliftment. भाई सो मत यार स्ट्रीम पे भाई, कौन सो रहा है भाई? हम है ना भाई, आपकी नींद भगाने के लिए टेंशन मत लो भाई. Already answered, but we can obviously take it again. सुमनजीत राघवंशी भाई ने क्वेश्चन पूछा है, can we do streaming on 5600G? Yeah, perfect. I think that's very important you guys to know the compatibility of motherboard chipsets. One thing we have made sure is that we give that compatibility on the existing set of chipsets, starting from the 400 series as well as the 500 series. So you can pair it with a B450 with updated BIOS
and go up to X570. CPU matters in GPU mining? No, it doesn't, bro. You can do it. आपका GPU अगर अच्छा है तो you can mine. And the last question. What is IO die in a CPU? IO die ना देखो सिर्फ AMD CPUs में आपको क्या बोलते हैं जो सबसे बड़ी वाली साइड में दिखती है ना, एक तो दो चिप्स दिखेंगी आपको जो छोटी छोटी साथ में रहती हैं, एक अलग से रहती है बड़ी सी, वो IO die है। और उसका काम होता है आपके जो USB पोर्ट्स एंड आपके जितने भी PCI एंड जो भी इनपुट आउटपुट का जो भी है वो सब उस IO die के अंदर है, ठीक है, जो भी आपके कनेक्शंस हैं वो सब है। The heat is one of the doubt anybody would have, maybe even today. Bro, मुझे टेक्नीशियन भी ऐसा बिल्ड करना है तो क्या मुझे अभी करना चाहिए? कुछ अपग्रेडेशन बता दो अगर हो सकेंगे तो हाँ ब्रो अभी कर सकते हो, बट आपको प्राइसिंग हाई मिलेंगी। अगर हाई प्राइस में आप सेटिस्फाइड हो तो यू कैन बिल्ड लाइक टेक्नीशियन, नो इश्यूज एट ऑल। उनके स्पेक्स जो हैं उन्होंने अपने चैनल पे डाले हैं तो देखो और उससे have your all the workloads at ease of this power consumption, maximum up to 65 watt. So rest assured. स्वप्निल राणा भाई सही सलामत घर पहुंच गया रे भाई स्वप्निल भाई, बढ़िया भाई। And then there's one question from the comment section. This is by Sai Karthik Prashant, who's again asking a question along the same lines. Does it come with a stock cooler or should we go for an AIO cooler? Which one is good? Yeah, so both the CPUs come with stock क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। 5600G iGPU compared to big GPU, तो 5600G का भाई आप iGPU को ना आप कंपेयर कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली 1030 के बराबर, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा ऊपर नीचे बट अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1030। But someone is really an enthusiast who want to upgrade a higher end graphic card and push the load up to 8 cores completely, then maybe a recommended custom cooler from any of our partners in the market is still recommended. All right, with that we have finished up all the questions. A lot more coming. भाई मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? एस भाई दिया तो शायद मैंने नहीं दिया क्या? एक बार दोबारा पूछ लो भाई। But we'd like to thank each and every one. ये रहा शायद आपका कि 3400G गुड फॉर फ्री फायर अल्ट्रा स्मूथली ब्रो। 3400G इज गुड इनफ टू रन CS:GO और ये सब गेम्स। वाई रन फ्री फायर? अभी वैसे चलाने को चला सकते हो बट आई वुड रिकमेंड कि जब आप इतना हाई एंड CPU और इतना हाई एंड बिल्ड कर रहे हो, बिकॉज 5600G इज नॉट अ चीप CPU, तो मैं बोलूंगा बाय PC गेम्स या फिर PC गेम्स खेलो, मजे मारो। Thanks Mithun, and thanks one and all who joined this session. It was really good, great questions. I hope you guys are satisfied. If not, we have our team spread across the regions. You can reach out to us. We are there to address. अरे भाई किधर घूम रहे थे? अरे भाई बताएंगे, हमने Q&A सेशन करा है, मस्त बताएंगे उसमें। Thank you all. Bye. भाई ये कोर्ट में दाढ़ी वाला आदमी कौन है? ब्रो वो AMD के ना, AMD इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो हैं। बाकी अपने अपने चलो क्वेश्चंस पूछने चालू कर दो जिसके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आई थिंक जो है वो स्ट्रीम एंड हो चुकी है, तो जो भी अपने आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे ना वो पूछने चालू कर दो, ठीक है। तो आई गेस आपके सारे जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, यहाँ पे स्ट्रीम एंड हो चुकी है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए ऐसे ही। आप अपने क्वेश्चंस पूछो, मैं आपके क्वेश्चन स्ट्रीम पे देख रहा हूँ। अपने जितने भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ना उनको अपनी ईमेल आईडी के साथ पूछना चालू करो इस 5000 सीरीज से रिलेटेड, ठीक है। तो प्रदीप मंडल भाई ने पूछ लिया है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, जो जल्दी जल्दी पूछो, फिर उसके बाद ना हम एक चूज़ कर लेंगे बंदा जिसका सबसे इंटरेस्टिंग होगा। ईमेल आईडी के साथ पूछो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ईमेल आईडी के साथ। फिर उसको एक वो मिलेगा, क्या कहते हैं उसे, अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर। उससे कीबोर्ड माउस कुछ भी आप खरीद रहे हो ना अमेज़ॉन से, डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन का लिंक होगा, वहाँ से कुछ भी शॉपिंग करो, गिफ्ट वाउचर यूज़ करना, मज़े से फिर डिस्काउंट के साथ शॉपिंग करना, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन अपने डालने चालू कर दो। कहाँ हो भाई बंदो? जतिन भाई ने, ओके जतिन भाई आपका भी जो है क्वेश्चन हमने ले लिया है, डोंट वरी। ओके सबके, हाँ ठीक है, पूछते रहो, 2-3 बंदे और पूछ लो भाई। ओके सुमनजीत रघुवंशी भाई ने भी पूछ लिया है। एक बंदा एक ही क्वेश्चन पूछो भाई, ऐसे नहीं मल्टीपल पूछ रहे हो।
अरे भाई यथार्थ चतुर्वेदी, गिफ्ट वाउचर वाला क्वेश्चन नहीं पूछना है उससे, वो वैसे वाला पूछो ना। डज इट सपोर्ट, वाई डज इट नॉट सपोर्ट PCI 4.0? ओके ओके ओके, ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नाइस नाइस नाइस, इस पे एक अलग वीडियो बनाना। ओके भाई। कैन वी यूज दिस प्रोसेसर विद DDR4 रैम? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ब्रो। ठीक है ब्रो, तो जिन लोगों ने पूछना था पूछ लिया, अब मैं स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम एंडिंग द स्ट्रीम, और उसके बाद जो है गैम्बिट कुत्ते, तेरे को ये क्वेश्चन मिला, ठीक है, मैं स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ। एंड ठीक है, फिर उसके बाद हो गया और क्या। अरे गैम्बिट एक काम करते हैं यार, पता कहीं खाने चल लेते हैं, पता मैं सही बोल रहा हूँ, अभी है टाइम अपने पे, ठीक है, अपन लोग कहीं खाने चलते हैं, ठीक है, तुम लोग रेडी हो जाओ, अपन लोग खाने चलते हैं, तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। और गाइस एंड स्ट्रीम एंड करने का वक्त आ चुका है, तो अपन लोग स्ट्रीम एंड कर रहे हैं। और जो भी बंदा जिस भी बंदे का क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग होगा ना, मैंने सबके क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, तो आपको जो है वो कम्युनिटी टैब में पता चल जाएगा, और वो बंदे को जो है वो ईमेल आ जाएगा, और वो जो है जो भी गिफ्ट वाउचर है उसको ईमेल के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, मिल जाएगा आपको। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।